Hello and welcome to this new tutorial. In today's tutorial we are going to talk about stages of development of international relations. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे और जानेंगे the various stages of development of international relations. और शुरू करने से पहले फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा जाएगा, तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल के अंत तक बने रहिए, तभी आगे बढ़कर आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस कौन से स्टेजेस में डेवलप हुआ है. एनीवेज, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस as the youngest social science had its genesis in the first half of the 20th century and attained its adulthood in the post-Second World War period, passing through several trends and stages. So when we talk about international relations, yes, it is the youngest social science and its genesis, its start happened somewhere in the first half of the 20th century, and later it attained that maturity or attained its adulthood only during the post Second World War period. And through this period international relations have passed through various trends and stages, and these stages therefore are very important to understand like how international relations have evolved, how it has developed over a period of time. So Kenneth Thompson has summed up its development in following 4 stages. So therefore Kenneth Thompson has given the first four stages, and the rest 4 stages are given by various other scholars. Stages of development जो है वो बहुत important सब टॉपिक है, और IR जो बहुत यंगेस्ट सोशल साइंस है, इसकी जो शुरुआत होती है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी होती है. मतलब इसकी जो शुरुआत होती है वो पहले विश्व युद्ध के बाद से होती है, और उसको जो मेचोरिटी मिलती है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिलती है. और इसी दौरान इंटरनेशनल रिलेशंस हैव गॉन थ्रू वेरियस ट्रेंड्स और स्टेजेस. और केनेथ थॉम्सन जो है उन्होंने पहले 4 स्टेजेस दिए हैं और बाकी के 4 स्टेजेस बाद में ऐड किए गए. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ IR के 8 स्टेजेस है, इसको हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली रन्स अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सेकेंड स्टेज स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. थर्ड स्टेज बिगिंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and continue to exist throughout the interwar years and even after. And the fourth stage comes after the Second World War. Now these 4 are given by Kenneth Thompson. Now the next 5th stage counted from mid 60s to the 70s. Then 6th stage is which runs from late 70s to the first half of the 80s. And 7th stage begins in 1985 when Mikhail Gorbachev came on the scene, and the last stage of development of international relations commenced in the early 90s. So these are the 8 stages of development of international relations which we need to study more in detail. So the first stage is which runs up to the end of the First World War. So let us take this first stage. So international relations during this stage were taught by diplomatic historians who were more interested in history than in politics. In fact, their main concern was description of past events rather than the analysis of present ones and their future impact. Thus, this historical approach could not develop a theoretical core for the discipline. So what we need to understand here that during the first stage of development of IR, the international relations were basically taught by all these diplomatic historians,
and they were more interested in history than the politics. That means they were talking about more about historical events. They were talking about history by and large than the politics, and therefore the main concern during this phase of the development of IR was that they spoke more about past events rather than analyzing the present one and projecting what would be the future course of action. Well, because of these, the historical approach could not develop any theoretical core for the specific discipline. इस पहले स्टेज में जो इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़ाया गया वो डिप्लोमेटिक हिस्टोरियंस के द्वारा पढ़ाया गया, और उनका जो ज़्यादातर अमूमन जो इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री में था और पॉलिटिक्स में नहीं था, और इसकी वजह से उनका जो अप्रोच था वो बहुत डिस्क्रिप्शनल अप्रोच था टुवर्ड्स पास्ट इवेंट। मतलब वो सिर्फ पास्ट इवेंट जो हुए हैं उनको डिस्क्राइब किया करते थे, उनके बारे में डिस्कशन किया करते थे, रादर एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट वन। मतलब वो आज की दुनिया में आज की तारीख में जो हो रहा था उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे थे। उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका डिस्कशन नहीं कर रहे थे, और ज़्यादातर उनका जो फोकस था वो पास्ट में था, पास्ट के इवेंट के ऊपर था। और इसी के चलते आगे हिस्टोरिकल अप्रोच थियोरेटिकल डेवलपमेंट कर ही नहीं सका, और थियोरेटिकल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप फ्यूचर को समझे, फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट करें। सो बिकॉज ऑफ दिस द एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच could not develop any theoretical core for the discipline. Well, moving on to the point number 2, the second stage started somewhere after the end of the First World War. Now, during this stage, the focus was given only on the study of current affair, and current affair was stressed more upon. Hence, this approach was also became a partial in as much as it gave importance to the present without much reference to the past. Thus, both in the first and the second stage, the approach was one-sided. Now, again, during this second stage, which started after the end of the First World War, the stress was given more on the study of a current affair, because current affair is very important. How countries are evolving, how countries are behaving with each other, what is their current relationship, how it is shaping the entire future of the world. Now here we need to understand that during this stage they gave so much of importance to the current affair that they never talked about the historical significance. They never gave any reference to the past events, and that is another biggest problem. See, in any international relations, if you want to understand any event or political incident which has happened, then yes, you need to give some reference to the historical past as well. You have to see what was it and how it has become and what it will have a future impact. So definitely when you talk about any international event or a political event, we have to see from a historical perspective as well as current perspective, and probably what it will have impact in the future. So here it was little different, as we have seen in the first stage. In the first stage they gave more importance to historical events and the past events, whereas in the second stage it was all about current affairs and they did not even give any reference to the past, and therefore both the first and second stage approach can be considered as a one-sided approach. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है वो शुरू हुआ आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस दौरान जो स्टडी की गई है वो ज़्यादातर करंट अफेयर के ऊपर स्ट्रेस की गई है, और इसके कारण ये भी अप्रोच थोड़ा पार्शियल रहा क्योंकि इस दौरान कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया विद रेफरेंस टू द पास्ट इवेंट। मतलब इस दौरान पास्ट इवेंट्स के बारे में ज़्यादा रेफरेंस नहीं दिया है, बल्कि वो सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते थे, और इसी के चलते ये भी जो स्टेज है और पहली जो भी स्टेज है वो वन साइडेड कहलाई गई। क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना है, इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, तो करंट अफेयर के साथ साथ पास्ट का भी थोड़ा
रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स उसकी जो शुरुआत कहाँ हुई है, उसका इम्पैक्ट आज की तारीख में कैसा है और फ्यूचर में उसका कैसा होगा, ये जो स्टडी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज दोनों को वन साइडेड अप्रोच कहा गया है, क्योंकि इन फर्स्ट स्टेज ज़्यादा स्ट्रेस पास्ट इवेंट के ऊपर दिया था और सेकेंड स्टेज में, इस स्टेज में जो रेफरेंस है ज़्यादा फोकस है वो करंट अफेयर के ऊपर दिया है। और इसीलिए दोनों स्टेजेस का अप्रोच जो है वो वन साइडेड रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अ थर्ड स्टेज विच बिगेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and continued to exist throughout the interwar years and even after. Now, during this phase or this stage, the emphasis was shifted to reforms or reformism. So, the objective was to establish a healthy world order which would be free from war and conflict. Thus, during this period of time, much hope was pinned on the League of Nations, because League of Nations came into existence immediately after the First World War. So there was a lot of hope on the League of Nations, which was expected to replace narrow nationalism by internationalism and to remove the threats of war. In fact, and therefore international law as well as international organizations were given importance. So during this phase, the third stage of development of IR, which starts after the First World War, and it continued throughout the interwar years. Even after that, it means it continues throughout the Second World War, and even to some extent even after that. And during this phase, the emphasis, the importance was shifted to bring reform in the world. And why do we need a reform? Because the world is at war, and war brings distractions. So therefore reform's objective was to establish a healthy world. Okay, now how to have a healthy world order? Now healthy world order is basically where we don't have war, where we don't have conflict. And therefore after the First World War, if you remember, there was establishment of a League of Nations, and League of Nations was supposed to some extent supposed to clear out the issues or a conflict among the nations. Nations were supposed to come and discuss those issues in the League of Nations, and therefore there was a great expectation that League of Nations will replace that narrow nationalism what have become a big issue into an internationalism, and by making it will remove all the threats of war which were there during that period of time. And therefore it will also going to bring some importance to the international law as well as international organization, because during this phase of time international law and international organizations were given importance. तीसरा जो स्टेज है जो शुरू हुआ पहले विश्व युद्ध के बाद और फिर आगे चलता रहा थ्रूआउट इंटर वॉर ईयर्स, मतलब थ्रूआउट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस दौरान ये चलता रहा, और कुछ हद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी थोड़ा इसको इम्पोर्टेंस दिया गया। तो इस फेज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को इम्पोर्टेंस मिला वो था रिफॉर्म, कि रिफॉर्म लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और रिफॉर्म किस लिए होना चाहिए? ताकि जो व्यवस्था है दुनिया की, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो हेल्दी रहे। अगर ये हेल्दी रहना है ग्लोबल ऑर्डर, तो ये वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से दूर होना चाहिए, उसको वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से आज़ादी मिलनी चाहिए। सो बेसिकली दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ हेल्दी वर्ल्ड ऑर्डर विच विल ब्रिंग नो वॉर एंड नो कॉन्फ्लिक्ट। सो इसी के चलते हुए आगे जो सबसे बड़ा जो होप था वो लीग ऑफ नेशंस था, क्योंकि इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, और लीग ऑफ नेशन ने कुछ हद तक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि अगर कुछ देश अगर वॉर के लिए जाएंगे तो हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे, और वो प्लेटफॉर्म रहेगा बातचीत का, कि आप एक टेबल पे आके अपने इश्यूज़ पुट डाउन करिए
और इसके ऊपर डिबेट करिए, डिस्कशन करिए. सो देयरफॉर देयर वाज अ मच ऑफ होप विच वाज पिन डाउन ऑन लीग ऑफ नेशन, और हर एक किसी का एक्सपेक्टेशन था कि लीग ऑफ नेशन एक जो नैरो नेशनलिज्म है उसको बदल कर इंटरनेशनलिज्म के ऊपर फोकस करेगा, और इसके चलते आगे जो थ्रेट्स ऑफ वॉर है वो निकल जाएंगे. और इसीलिए इसी दौरान इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत तवज्जो या इम्पोर्टेंस दिया गया. तो ये जो थर्ड फेज था ये बेसिकली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और थ्रू आउट इंटर वॉर ईयर्स चलता रहा. और इस दौरान जो एम्फोसिस था वो रिफॉर्म के ऊपर था, और रिफॉर्म के नाम पर लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई. और लीग ऑफ नेशन का जो इम्पोर्टेंस था कि आगे के जो होने वाले वॉर्स है उनको बंद करे और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे सभी दुनिया के लिए कि वो आके बातचीत करे. सो इन शॉर्ट द थर्ड स्टेज बेसिकली टॉक्स अबाउट रिफॉर्म, ब्रिंगिंग रिफॉर्म and establishing the healthy world order. So this is all about the third very important stage. Well, next we have the fourth stage which came after the Second World War. Now the war and its devastation shaked people's faith in the utility of international organizations and law as instrument of peace. In fact, during this phase the emphasis shifted to making a scientific analysis of the development in international politics. So scientific studies were undertaken as what causes war and how to avert it. Thus, the finding was that forces and influences which shapes the behavior of the state became the chief concerns of the studies. And these forces and influences were basically determinants of the foreign policy, techniques of the conduct of the foreign relations, the mode of the resolution of international conflicts, and civil management. So, with this scientific nature of understanding, international relations in 50s and 60s became a realistic. So, with this scientific nature of understanding of IR in 1950s and early 60s led to the foundation of a realistic school of thought, and the principal prophets of the political realisms were E. H. Carr, Hans J. Morgenthau, Kenneth Thompson, George Kennan, and Henry Kissinger. So during this phase, the fourth very important phase of the stage of the development of international relations, which actually came after the Second World War, and during this stage the devastation which has carried out because of the Second World War has actually shaken the people's faith in the importance or the utility of international organizations. People started thinking about that no matter which international organizations you bring in, no matter how law you may use it to stop any wars, but it shows that these organizations could not prevent the war, and therefore people started losing their faith in international organizations, and therefore law as an instrument of a peace as well as the importance of international organizations lost its importance to some extent because of the Second World War destruction and devastation. Moreover, during this phase, therefore, the emphasis was shifted to understand scientific analysis of the developments which are happening in international politics. So therefore, finally, scientific studies were undertaken to basically understand what causes war and how to avert it. Basically, what causes war and how to avert it. And therefore, the findings were such, and they found the findings, and the findings were that there are some forces which actually influence the behavior of the state, or sometimes which shapes the behavior of the state, and therefore these forces became the most important reason to study the causes of the war. And what are these forces which influence? Basically the determinants of the foreign policy.
okay, the very important factors which makes the foreign policy of a particular country. Similarly, what are the techniques which have been conducted to implement the foreign policy? Next, what are the modes of resolution of international conflict? There are different modes when it comes to resolving the international conflicts and the crisis management, how one can manage the crisis. And therefore, these studies played a very important role during this stage to understand a scientific analysis of the development in international politics, primarily focused more on the causes of war and how to avert it. So here they have spoken about that there are certain forces which are shaping the behavior of the state, which eventually may lead to a war, and these are basically the determinants of foreign policy or techniques which are conducted to conduct foreign relations. And the findings to avert the wars were basically like how can you resolve the international conflict and how can you manage the crisis. So this phase, the fourth very important phase of development of IR, again emphasized more on scientific analysis to understand the international politics. चौथा जो ये फेज़ है, इस फेज़ के दौरान लोगों का जो विश्वास था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर लॉ में कि वो एक पीस कायम करेगी, वो फेल हो चुका है। ये फेल हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो बहुत डिस्ट्रक्शन लाया अपने साथ, बहुत से चीज़ों की तबाही हो गई, लाखों लोग मर गए, और इसके चलते लोगों का जो विश्वास था लीग ऑफ नेशन में बेसिकली वो टूट गया। और उसके बाद एक साइंटिफिक एनालिसिस के तरफ दुनिया ने मोड़ ले लिया, और जो एम्फोसिस था इस पूरी फेज़ में वो साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर दिया गया कि हमें अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना है, हमें अगर जो डेवलपमेंट होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो समझना है, तो हमें साइंटिफिक तरीके से समझना होगा। और इसीलिए आगे बढ़कर साइंटिफिक स्टडीज़ को अंडरटेक किया गया, बेसिकली टू स्टडी कि वॉर क्यों होती है, उसके कारण क्या है, अगर वॉर होते हैं तो हम उसे एवर्ट कैसे कर सकते हो, उसे हम टाल कैसे सकते हैं। तो जो फाइंडिंग्स जो सामने रखी गई उसमें दो चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट मेंशन किया था कि वहाँ पर ऐसी फोर्सेस है जो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी स्टेट को बिहेव करने के लिए, या फिर ऐसी फोर्सेस है जो इन्फ्लुएंस करती है या फिर शेप कर देती है बिहेवियर ऑफ द स्टेट को। तो बाद में जो फोर्सेस थी वो सामने रखी गई कि वो ये कौन सी फोर्सेस है जो एक देश का बिहेवियर चेंज करती है, और वो थी बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि आपके क्या फैक्टर है जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को तैयार करते हैं, और ये फैक्टर कहीं ना कहीं एक कारण बने या फिर वॉर के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट के लिए। सिमिलरली आप कैसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने के लिए, ये टेक्निक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसी टेक्निक की वजह से आप वॉर भी छेड़ सकते हैं। और आगे उन्होंने ये भी रखा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको कंट्रोल में, काबू में कैसे लाएं। तो इसलिए मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस किया गया, और अगर ऐसी क्राइसिस खड़ी होती है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस दिया गया। सो बेसिकली ये जो फेज़ है, फेज़ नंबर 4, इस दौरान हमें ये समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन, पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज लॉ, और इसीलिए आगे चलकर इसका जो एम्फोसिस था वो शिफ्ट हो गया साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर कि हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट को समझे। और इसी के चलते साइंटिफिक स्टडीज़ की गई टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ वॉर एंड हाउ टू एवर्ट इट। और जो फाइंडिंग्स थे उसमें ये दिखाया गया कि कुछ ऐसे फोर्सेस है जो किसी भी स्टेट को इन्फ्लुएंस करती है अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। और ये जो फोर्सेस थी वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, टेक्निक्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द फॉरेन रिलेशंस। अगर इसको एवर्ट करना है
तो वो बेसिकली अबाउट मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर ये जो चौथा जो फेज़ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, और ये जो सारी टेक्निक्स है यही टेक्निक्स उस फेज़ में डेवलप की गई, और इस तरह से ये स्टेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। And these are the very important aspects of the fourth stage, which basically talks about the need of understanding the international politics more in scientific manner. आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, और आने वाले जो 4 दूसरे स्टेजेस है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। So for this tutorial we have understood first 4 stages of development of IR. And in next tutorial, I shall talk about the rest of the 4 stages. I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.